Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In a previous video, we have seen numericals based on Coulomb's law. In today's video lecture, we will discuss about electric field intensity due to line charge distribution and electric field of an infinite line charge. So as we know that for point charge distribution, when different point charges are present at different positions, then each point charge produces its own electric field intensity, and the resultant electric field intensity is the vector sum of individual electric field. So if we consider the line charge distribution, then let us consider the curved line as shown in this figure, and here the charge is uniformly distributed. That means the charge density is constant, like this. So in this case, the charge density is denoted by rho. This is the line charge density, and it is defined as the total charge per unit length. That means rho is equal to Q divided by length of line. Here rho is equal to Q, which is nothing but charge, total charge spread divided by length of the line. So the unit of this line charge density is equal to, we know the unit of Q, that is Coulomb, and the length is measured in meter. So it is given by Coulomb per meter, because the charge is measured in coulombs and the length of line is measured in meter. So the unit of rho is the Coulomb per meter. So here basically the density is denoted by rho, and here we are considering the line charge density, hence it is denoted as a rho of L, that is rho L. So the charge density rho L is always constant. So in case of electric field intensity due to line charge distribution, let us consider the small differential length dl. This is the line, and here we have to consider the only small portion of that length which is having differential length. So if rho L is multiplied by differential length, then a differential charge is obtained. As we know that here the rho is equal to, here charge by length is there, it is the ratio of charge per unit length. So we can define here the value of this dq is equal to rho L into dl. So जैसे हमने अभी डिफाइन किया था, that is dq, this is differential charge, is equal to rho L into dl. ये होता है आपका line charge density, which is the ratio of charge per unit length. And if we consider the small differential charge, that is dq, that is differential charge, then with respect to that this length will becomes differential length, that is dl. Okay, so this differential charge is considered as the point charge, and it produces an electric field which is called as differential electric field. So we have equation of E bar due to Q, that is E bar is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square into AR cap. Okay, so that's why we can write here dE bar, that is differential electric field intensity, which is produced by differential charge and differential length. dE is equal to dq upon 4 pi epsilon 0 r square into AR cap. So from that equation we can write electric field intensity at point P. E bar is equal to integration of dq upon 4 pi epsilon 0 r square into AR cap. तो हमने स्टार्टिंग में dE यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट हियर दी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन ये जो आपका डिफरेंशियल dE बार आएगा तो राइट साइड में ये जाके आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा. सो हियर कैपिटल E बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L इनसाइड इंटीग्रेशन dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इंटू AR कैप. सो हियर वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस dq एज अ rho L dl, that is this rho L is nothing but line charge density and dl is the differential length. So this will become E bar is equal to integration rho L dl upon 4 pi epsilon 0 r square into AR cap. So this gives the equation for electric field of a finite line charge.
So in case of line charge distribution, we will consider following two cases. The first case is electric field of an infinite line charge, and second case is electric field of the line charge over circular ring. Okay, so let us see first electric field of an infinite line charge. So for that, consider again a charge with uniform density, that is rho L, is distributed along an infinite straight line. Let us consider here the coordinate system. This is x, y and z axis, and here the charge is uniformly distributed along this infinite straight line. So we have to consider here z. So we will choose here z axis as an infinite straight line which is extending from this minus infinity to प्लस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हमने कंसीडर जो कंडीशन किया है उसमें आपको यहाँ पे एक इन्फानाइट लाइन चार्ज चूज करना है. आप ये एक्स वाला या वाई या जेड भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जेड एक्सिस को कंसिडर किया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो कंसिडर अगेन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ लाइन चार्ज. यहाँ पे एक टोटल आपका इन्फानाइट लाइन चार्ज यहाँ पे दिया है, उसमें से हमने बहुत ही छोटा लाइन चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया है विच इज हैविंग differential length that is dl. So let this line charge dl having points 0, 0, z, that means differential length is equal to dz. यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है आपका ये भी 0 हो जाएगा और y ये भी 0 होगा, बिकॉज जो हमने z एक्सिस यहाँ पे यूज किया है, दिस एक्सिस इज यूज्ड एज अ इन्फानाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो दैट्स वाई एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके 0, 0 हो जाएंगे एंड ये आपका z सिर्फ यहाँ पे रहेगा. सो दैट मीन्स हियर दिस डिफरेंशियल लेंथ इज इक्वल टू dz. देन स्मॉल सेगमेंट ऑफ लाइन चार्ज रिप्रेजेंट अ पॉइंट चार्ज dq. सो वी कैन राइट हियर अगेन इन केस ऑफ dq इज इक्वल टू, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू rho l upon dq upon dl. This is line charge density. So we can write here this dq is equal to multiplication of this rho l into dl, and here dl is nothing but dz. So we can write the value of dq is equal to rho l dl is equal to rho l dz. Okay. Next point is here this question is that how to select the coordinate system. So if coordinate system is not mentioned in the equation, then we can consider any practical example. So it is the line charge distribution, and the good example of that line charge is the coaxial cable carrying current I. So here it is considered as a cylindrical. यहाँ पे देख सकते हो आप, this is the cylindrical shape. तो hence it is cylindrical. So we will be using here cylindrical coordinate system. Okay, यहाँ पे उसको कार्टेशियन हमने कंसिडर किया था, एक्सिस में कंसिडर किया था एक्स वाई जेड, and after that we have to convert it into the cylindrical form. Okay, so for that here again consider the total charge, that is q, which is spread on the total length l. Then for length dl the charge becomes d. तो जो हमने यहाँ पे एक्सिस कंसिडर किया है that is z axis, it is basically infinite line charge present है यहाँ पे, that is from minus infinity to plus infinity. So we cannot define here the each and every point. ठीक है, so we have to consider here at initial condition very small area. अगर हम स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो जो छोटा चार्ज होगा वो आएगा आपका dq, एंड दी अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज de, दैट इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो पहले हम जो डिफरेंशियल एरिया है, डिफरेंशियल जो चार्ज है ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द टोटल चार्ज बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन. ओके, सो हियर द चार्ज dq इज वेरी स्मॉल as compared to the total charge q, so it is considered as a point charge. Okay, so in Cartesian coordinate system the coordinates of dq are 0, 0, z, because here it is on z axis. हमने z axis यहाँ पे consider किया है, so that's why the Cartesian coordinates becomes 0, 0, z. But in cylindrical coordinate system the coordinates of dq are 0, 5, z. This is because phi is an angle of plane which can be shown in this figure. So here this is x, y and z. अगर हम यहाँ पे cylindrical coordinate system consider करते हैं, so this is the phi which is the angle between the x and y,
and which is considered as a constant plane. So that's why we have to take here the coordinates of the dq are 0, 5, z. ठीक है. If we consider any point which is present on that constant plane and make an angle phi with respect to this x and z plane, then the point dq is on z axis but it is on the plane. So that's why here phi is equal to constant. So its coordinates are 0, 5, z. Okay. So when phi is equal to constant plane completely overlaps on that xz plane, then phi is equal to 0 and the coordinates will be 0, 0, 0. सॉरी इट इज 0, 0, z. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ dq आर 0, 5, z बिकॉज हियर phi इज द कांस्टेंट प्लेन. सो वी हैव टू टेक हियर जो आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे आता है आपका r, phi एंड z वैल्यू. यहाँ पे r हम बाय डिफॉल्ट 0 लेंगे, z आपका यहाँ पे एज इट इज आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने इन्फानाइट जो लाइन हमारा कंसिडर किया है इट इज ऑन दिस z एक्सिस. तो z आपका कंपल्सरी आएगा एंड दिस phi इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द x एंड y प्लेन. ओके. सो हियर सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट e बार एट अ पॉइंट p in the xy plane. So here point p is in the x and y plane. So the coordinates of p are here. Let us see how to locate the point p. This is our dq point, that is a differential charge having coordinates 0, 5, z जो हमने अभी डिफाइन किया है. उसके बाद let us see again consider the second point, that is point p, जहाँ पे ये आपका r होगा डिस्टेंस फ्रॉम दैट ओरिजिन. तो ये आएगा आपका r, phi आएगा बिकॉज इट इज लाई बिटवीन x एंड y प्लेन और यहाँ पे एक आपका एंगल होता है जो होता है आपका phi. सो वी कैन राइट हियर r, phi, z एक्सिस यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है, सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक हियर 0. ओके. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, that is r, phi, 0 and for dq it is 0, 5, z. Okay. So here the r bar represents the vector which is starting from the point dq. This is differential charge and the r bar vector is starting from this dq point and which will move towards the point p. So that's why here the direction of vector is towards point p. So from the given coordinates we can calculate here vector, that is vector r bar. Vector r bar is equal to, this is starting point and this is ending point. So here if you want to calculate the vector r bar, then we have to take here ending point minus starting point. Ending point यहाँ पे दिए है आपको, that is r bar plus phi a phi bar minus this is again phi a phi bar plus z a z bar. So we'll get here the value of r bar is equal to r a r bar माइनस जेड ए जेड बार. सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है आपको. यहाँ पे आर बार हम कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट में से ये पॉइंट हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा इक्वेशन, दैट इज द वेक्टर आर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस आर बार वेक्टर वी कैन कैलकुलेट हियर यूनिट वेक्टर विच इज गिवन बाय ए आर बार इज इक्वल टू आर बार अपॉन मॉड आर. द वैल्यू ऑफ आर बार इज एंडिंग वेक्टर माइनस स्टार्टिंग वेक्टर which is equal to r a r bar minus z a z bar upon under root of r square plus z square. So due to that differential point dq, it produces the differential electric field, that is dE bar, and the definition of electric field intensity is given by this formula. dE bar, that is differential electric field intensity, is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r square into ar cap. But here we considering the differential charge, so that's why instead of q we can write here dq upon 4 pi epsilon 0 r square into ar cap. So here we know the value of this ar cap, that is the unit vector. So we have to put here the value of this ar bar in this equation. Then we'll get dE bar is equal to dq upon 4 pi epsilon r square into r a r bar minus z a z bar upon
under root of r square plus z square. So here the r is nothing but distance between points dq and p. So the differential equation of electric field intensity is equal to, that is dE bar is equal to dq upon 4 pi epsilon. The value of r is under root of r square plus z square bracket square into r bar minus z bar upon r square plus z square, which is equal to dq upon 4 pi epsilon 0 into r bar minus z bar, and this is r square plus z square raised to power 1, and this r square plus z square means यहाँ पे आएगा आपका रेस टू पावर 1/2. यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है, अंडर रूट दिया है, दैट मीन्स दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू पावर 1/2, एंड दिस इज 1. सो 1/2 plus 1 becomes r square plus z square raised to power 3/2. So the line charge is uniformly distributed along z axis. So we are considering the small charge dq which is present on here positive z axis. ठीक है, तो जो हमने ये इक्वेशन कंसिडर किया था यहाँ पे, yes, in that case here we are considering only for the positive axis, positive z axis. So if we consider here the negative axis, then same charge is present on the negative z axis also. So in this equation here the r bar minus z bar plus z bar is there. So that's why the z terms are cancelled, and we'll get equation dE bar is equal to dq upon 4 pi epsilon 0 into r bar upon r square plus z square raised to power 3/2. ठीक है, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था ये सिर्फ हमारा पॉजिटिव एक्सिस के लिए कंसिडर किया था. इफ यू कंसिडर अगेन निगेटिव जेड एक्सिस, तो ये जो आपका इक्वेशन है फॉर जेड बार, तो पॉजिटिव के लिए ये आएगा आपका प्लस जेड बार, तो ये माइनस एंड प्लस कैंसिल हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी कैन राइट ओनली दिस टर्म, that is r bar upon r square plus z square raised to power 3/2. This is the equation for differential electric field. So here if you want to calculate the total electric field intensity, तो जो भी हमारा differential electric field intensity आएगा at the right hand side, यहाँ पे हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे कभी भी. So that's why this equation becomes E bar is equal to dE bar का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बस यही आपको यहाँ पे लिखना है. This will become E bar is equal to minus infinity to plus infinity dq upon 4 pi epsilon 0 into r bar upon r square plus z square raised to power 3/2. ठीक है, तो ये जो हमारा dq हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था which is equal to rho l into dz. So we can write here the value of dq is rho l dz. बाकी का आपका इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज रहेगा into AR cap, ये आपका as it is रहेगा. So here put z is equal to r tan t and the value of dz is equal to r sec square t dt. So the limits of integration will change from minus pi/2 to plus pi/2. So this will become r into rho l as it is. Then the value of dz is equal to r sec square t into dt. This is sec square t into AR bar upon 4 pi epsilon 0 in bracket r square plus r square tan square t raised to power 3/2 into dt. ये जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था, दैट इज हियर द वैल्यू ऑफ r z हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, दैट इज डी जेड एंड दिस इज z. तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है. देन विल गेट E bar इज इक्वल टू minus pi/2 to plus pi/2 rho l as it is. This r and this r becomes r square into sec square t into dt into AR bar upon 4 pi epsilon 0 r square plus r square tan square t raised to power 3/2 as it is आएगा. उसके बाद सिर्फ ये टर्म को हम यहाँ पे साइड में लेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. So here this r square plus r square tan square t raised to power 3/2 is there. So यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज r square raised to power 3/2 इंटू, हमने यहाँ पे r square को कॉमन लिया है
एंड इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर टी रेज टू पावर 3/2 आपका एज इट इज आएगा. सो दिस 2 एंड डिनोमिनेटर 2 गेट कैंसल. सो दिस विल बिकम r क्यूब in bracket 1 plus tan square t raised to power 3/2. By using then trigonometric identities, we can write 1 plus tan square t is equal to sec square t. So here we can write the value of sec square t is equal to 1 plus tan square t. ये आएगा आपका r cube into sec square t raised to power 3/2. So this will become r cube. Then this again 2 get cancel, and this will become r cube sec cube into t. Okay. So here the E bar, that is equation of electric field intensity, is equal to integration minus infinity to plus infinity r rho l into r square into sec square t dt into ar bar upon 4 pi epsilon 0 into r cube into sec cube t is equal to, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन था, यहाँ पे हमने 1 by 1 उसको सिंप्लीफाई किया है. बस ये जो हमारा पूरा टर्म था इसको हमने रिड्यूस किया और उसके बाद हमने सिर्फ उसकी जगह इसको लिखा है, दैट इज r क्यूब इंटू सेक क्यूब t इज इक्वल टू रो एल इंटू ए आर बार. दिस r स्क्वायर एंड r स्क्वायर एक कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपका r बचेगा. सो दिस विल बिकम रो एल इंटू ए आर बार अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r सेक टी. यहाँ पे सेक स्क्वायर टी एंड यहाँ पे सेक स्क्वायर टी ये भी कट हो जाएगा, सिर्फ एक सेक ऑफ टी यहाँ पे बचेगा. देन ई बार इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू ए आर कैप इनसाइड इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 1 अपॉन सेक टी इंटू डी टी इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू ए आर cap, and inside integration we know that the 1 upon sec t is nothing but cos t. So here inside integration cos t into dt is there. So if you find the integration of the cos t, then it is sin t. जो भी आपके आउटसाइड इंटीग्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज है ये आपके एज इट इज यहाँ पे रहेंगे. सो हियर द इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस sin t, sorry, here the integration of cos t is sin t having limits pi by 2 to minus pi by 2. If we put the limits, that is upper limits minus lower limit, then we will get the sin pi by 2 is 1 minus of minus sin again pi by 2 is 1, so 1 plus 1 is 2. So we'll get rho l upon 4 pi epsilon 0 r ar cap into 2. So again this 2 will divide this 4, that is 2 2s are 4, which is equal to rho l ar bar upon 2 pi epsilon 0 r. So this is the final equation for electric field intensity due to infinite line charge, where rho l is nothing infinite line charge along z axis, r is nothing but a perpendicular distance from point P to the line charge, and AR bar is the unit vector in the direction of perpendicular. So this is all about our today's session. I hope you will like and enjoy. Today we will stop here with motivational quote. Today's motivational quote for you is, dream big, start small, start now. Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.